Yes, सर yes, let us start. सर अभी क्या क्या बोले आप सर? हम तो हाँ अभी वो ज्वाइन किए। अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ओ, सपोज PCl5 का देखते हैं कैसे हाइब्रिडाइजेशन एंड उसका बॉन्डिंग कैसे होता है। PCl5, तो इन PCl5 you will see phosphorus is surrounded by 5 chlorine atoms. तो chlorine atom having valency shell 7 electrons. So if chlorine atom is having valence shell 7 electron, if it is making single bond with phosphorus, chlorine valence shell becomes 7 plus 1 8 electron. But phosphorus valence shell having 5 electrons, if phosphorus is making single bond with chlorine atoms, so 5 plus 5 10 electrons coming. So phosphorus is having hyperoctet. Okay. So how the bond is formed, that is the thing. सर तो वो राइट साइड में जो ड्रॉ किया है वो तो लुईस स्ट्रक्चर है ना? हाँ, लुईस स्ट्रक्चर है सर लुईस को पता था क्या ये ऐसा होता है PCl5? नहीं ये हम लोग कर रहे हैं। तो PCl5 ऐसे हो सकता है। ल्यूइस ने बताया ये नहीं, ये PCl5 के बारे में कोई रिप्लाई नहीं है उनका। तो PCl5 ऐसे बॉन्ड फॉर्म करेगा तो फास्फोरस में 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया। हाँ तो सर। 5 sigma bond means phosphorus has to make 5 on pair electron, then only it can overlap. तो अभी phosphorus में देखो only 3 on pair electrons are there. तो in ground state it is ineligible to overlap. Ground state. So phosphorus can do excitation of electrons. So 3s 3p are there, so you can have 3d electrons. Whenever electrons are excited, it excited based on distance, means same cell से excite होता है electron. It will not go to 4s, it will go to 3d only. So if from 3s electron is excited, it will go to 3d only, it will not go to 4s. So suppose you will do the fill up of electron, after 3p 4s will come, then 3d will come. But whenever electron excitation takes place, it occurs based on distance from the nucleus. 3s से 3d को जाएगा, not 4s. Okay, so one electron jumps from 3s to 3d. So now you have 5 on pair electrons and you have 5 sigma bond. There is no pi bond. If there is pi bond, then there is a chance that sidewise overlapping and some electron may not participate in resonance. But there is no chance. सर रेजोनेंस क्या? सर रेजोनेंस Oh, sorry. Hybridization. ओ, Hybridization. So there is no chance of pi bond, means all electrons should participate in bonding. Hybridization. All electrons should participate in hybridization. तो sp3 and d, तो इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रॉन को छोड़ना नहीं है, सबको पार्टिसिपेट कराना है हाइब्रिडाइजेशन में. So now 3s 3p3 and 3d all will participate in resonance. So all together they will mix. So 3s 3p3 and 3d all together they mix and they form hybrid orbitals. How many hybrid orbitals? You see 5 hybridizing orbitals. So there must be 5 hybrid orbitals. यस सर. So 5 hybrid orbital name is sp3d. So sp3 5 hybridizing orbital means you will find all hybridizing orbital containing 1 electron each. Okay. Now chlorine is having 3pz backend. Suppose you take the electronic configuration of chlorine, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px, 2, 3py2, 3pz, 1. So you have 3pz1.
So chlorine you can write like this also, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px2, 3py1. You also can write like this, 3pzg2. So also you can write 3px1, 3py2, 3pz2. So chlorine configuration can be written either of these. Okay. तो सर इस करने से क्या फायदा होगा? तो ये ओवरलैपिंग जेड में भी कर सकता है, एक्स में भी कर सकता है, वाई में भी कर सकता है. ठीक. तो 3p of chlorine can overlap from any of the axis. तो 3p of chlorine